Hey guys, I am Mukul Solanki and today we will study about the electrical temperature instruments like resistance, thermometer, thermistors and thermocouple. So first one is resistance, thermocouple. The resistance of conductor changes when its temperature is changed. Obviously, as resistance of conductor increases, the temperature is also increases. It has positive temperature coefficient, that is as temperature increases, value of resistance also increases. The material used in ITD should have high value of resistivity so that minimum volume of material is used for construction of ITD. All metals produce positive change in resistance with temperature. Mostly platinum metal is used as a sensing medium. So now what is PT 100? Obviously the material used for ITD is platinum. It has 100 ohm resistance at 0 degree Celsius. So obviously PT 100, PT for platinum, okay, and 100 for 100 ohm resistance at 0 degree Celsius. So obviously you can see the basic constructional diagram of resistance thermometer. So obviously there are connecting leads, mounting threads, lead support, sheath, element, that is ITD, that is platinum element. Obviously thermowall is used. On the other hand, the second diagram shows the characteristics between temperature and resistance of nickel, copper and platinum. You can see as temperature increases, the resistance of that material also increases. So obviously there is a table. So metal resistance temperature coefficient per degree Celsius temperature range for platinum, copper, nickel and tungsten. You can see the basic difference between platinum and other materials. So obviously we used ITD as a sensing element in this bridge circuit. So in this bridge circuit, so R1, R2, R3, then R4, RS and R5. Here R3, RS and R4 are in series. Okay, so formula will be generated like this. R1 R5 is equal to R2 into R3 plus RS plus R4. So R1 upon R2 is equals to R3 plus RS plus R4 upon R5 for solving bridge circuit. So obviously in terms of resistance temperature coefficient, that is alpha per degree Celsius, R2 is equal to R0 1 plus alpha 0 delta T. So delta T means T2 minus T0 for finding R2. This is the basic formula for solving the numericals on ITD. Here R2 means resistance at T2 degree Celsius, R0 resistance at 0 degree Celsius, alpha 0 temperature coefficient of resistance, T0 temperature at resistance R0 and T2 temperature at resistance R2. Obviously, so this is the first numerical about ITD, and ITD has temperature coefficient alpha is equal to 0.0042 per degree Celsius and R0 is equal to 100 ohm at 0 degree Celsius. Find the value of resistance at minus 160 degree Celsius. So solution, obviously given data as above. Okay, R0 is equal to 100 ohm at 0 degree Celsius. Delta T is equal to T2 minus T1. T2 is equal to minus 160 degree Celsius. T1 0 degree Celsius, alpha 0.0042 per degree Celsius. R2 हमें फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली. सो हम यूज़ करने वाले R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1, सेकेंडरी टेम्परेचर माइनस प्राइमरी और इनिशियल टेम्परेचर. सो R2 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 1 plus alpha 0 T2 minus T1. So obviously after putting above values we are getting this form. So final answer for R2 is 32.8 ohm. Value of resistance at 160 degree Celsius is 32.8. So next numerical is an ITD has alpha is equal to 0.038 per degree Celsius and R is equal to 120 ohm at 20 degree Celsius. Find the resistance at 80 degree Celsius. Determine the temperature if resistance is 180 ohm. So obviously alpha is equal to 0.0038 per degree Celsius. R1 की वैल्यू हमें दी हुई है at 20 डिग्री सेल्सियस. सो 120 ओहम at 20 डिग्री सेल्सियस. सो T2 क्या दिया है हमें 80 डिग्री सेल्सियस हमें T2 दिया है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी R2 फाइंड आउट करना है at 80 डिग्री सेल्सियस. तो हमने क्या किया at 80 डिग्री सेल्सियस में R2 फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ
this formula. R2 is equals to R1 1 plus alpha 1 T2 minus T1. So after putting above values, R2 is equals to 147.36 ओहम. और हमें सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया फाइंड द रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इफ रेजिस्टेंस एट 180 ओहम. सो 180 ओहम पे हमारा टेम्परेचर मीन्स T3 इज इक्वल टू वॉट एट 180 ओहम. सो 180 ओहम पे हमारे T3 कितना रहने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 147.36 ओहम. सो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग T3. सो R3 is equals to R1 1 plus alpha 1 T3 minus T1. So obviously after putting above values we are getting T3 is equals to 151.58 degree Celsius. Okay, got it. So next one is our thermistor. So thermistor, that is thermally sensitive variable resistor, are semiconductor, ceramic, non-metallic that are sensitive to temperature. आप देख सकते हो कि थर्मिस्टर ये जो वर्ड जो डिराइव हुआ है वो थर्मली सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर, इसके जो इनिशियल वर्डिंग और आखिरी के जो वर्डिंग है ओके उनको मिला के थर्मिस्टर ये हमने एक सिंगल वर्ड फॉर्म किया है. सो थर्मिस्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंटर्ड ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स सच एज मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एंड यूरेनियम. दे आर मे बी इन फॉर्म ऑफ बीड्स, रॉड्स, प्रोब एंड डिस्क. थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. मोस्टली थर्मिस्टर जो है वो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में ही हम उसे यूज़ करते हैं. वो नॉर्म ऐसे देखा जाए तो थर्मिस्टर हमें दोनों कोएफिशिएंट में हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एज वेल एज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लेकिन हम उसे मैक्सिमम तो भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में ही यूज़ करते हैं. दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज नॉन लीनियर. सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हम थर्मिस्टर्स यूज़ करते हैं, बीट टाइप, प्रोब टाइप, डिस्क टाइप एंड रॉड टाइप. और यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स शो किए हैं लाइक डायमीटर, लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस थर्मिस्टर्स. सो नेक्स्ट वन इज हम जब थर्मिस्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सो RT इज इक्वल टू R0 e raised to beta 1 upon T minus 1 upon capital T0. So RT for resistance of the thermistor at absolute temperature T degree Kelvin. R0 resistance of the thermistor at absolute temperature T degree Kelvin. Beta is equal to a constant depending upon the material of thermistor, typically 3400 to 3900. याद रखिए हम थर्मिस्टर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम डिग्री केल्विन के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, और जब हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आप यहाँ पे नॉन लीनियर और एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं थर्मिस्टर्स का. ओके, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे 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 रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. ओके, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ऑब्वियसली हियर द बेसिक difference between resistance thermometer and thermistor. So first one is made of metal which are good conductors of electricity, for example copper, platinum and nickel. On the other hand, first point for thermistor is made of metallic sintered oxides such as cobalt, manganese, nickel, iron and uranium. Second point in resistance thermometer, it has positive temperature coefficient. Obviously thermistor has both positive and negative temperature coefficient, but we normally use negative temperature coefficient in thermistor. So the temperature range for thermometer is minus 100 degrees Celsius to 650 degrees Celsius, and in thermistor minus 50 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. In thermometer resistance change is small, positive and linear. In thermistor resistance change is large and non-linear, that is exponential. Okay, in thermometer they have better reproducibility and low hysteresis. In thermistor they have less reproducibility and more hysteresis. In thermometer relative in bigger size, thermistor are quite small in size obviously. So in next lecture we will study about thermocouple. So that is enough for today. Thank you for listening. God bless you all.